theorem 6.1 is nothing but the BPT, that is basic proportionality theorem. The theorem says that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. That means you have been given a triangle ABC. If a line is drawn parallel to one side, that means DE is parallel to BC given to us to intersect other two side in distinct point. That means जो DE आपकी line है that is intersecting AB at point D and AC at point E, then you have to prove other two sides are divided in the same ratio. That means you have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शन का मतलब इज नथिंग बट द रेशियो ओनली. So that means अगर ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC गिवन है, you have to prove कि जो DE लाइन है, जो D पॉइंट है AB पे एंड E पॉइंट है AC पे, वो आपको AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स रेशियो 2:3 हो सकता है, 5:6 होता है, इट मे बी एनीथिंग, बट आपका रेशियो सेम है. इट डजंट मीन कि AD और AE की वैल्यू सेम है. सी उसकी वैल्यू 2/3 है तो उसकी वैल्यू 4/6 भी हो सकती है. रेशियो को सिंप्लीफाई करके 2/3 आ सकता है. So that means you have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. So let's start the given. Given is triangle ABC in which DE parallel BC. To prove AD upon DB is equal to AE upon EC. See class, the given information is not sufficient to prove it. So we need some construction over here. So what we are doing is you can draw DM perpendicular to AC, EN perpendicular to AB, and you can join BE and DC. I repeat, the construction is draw DM perpendicular to AC, EN perpendicular to AB, and you have to join BE and DC. Now with the help of this construction, we can start the proof. Now see the triangle ADE at the top, marked colored with green. So as you know the into height. So if I talk about triangle ADE, see children, you have to find the triangle of AD of triangle ADE from the left hand side also and from the right hand side also. ठीक है, लेफ्ट साइड को कंसिडर करते हैं. लेफ्ट साइड को कंसिडर करने का मतलब क्या है कि आपका बेस क्या हो जाएगा AD एंड AD के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, हाइट क्या है EN, एंड देयरफॉर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आ गया a half into AD into EN because of the formula half into base into height. सिमिलरली अगर मैं ADE का एरिया सेम ट्राइंगल जो ग्रीन से मार्क्ड है, इसी ट्राइंगल का एरिया अगर हम राइट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले, राइट साइड का मतलब क्या है आपका AE को बेस लेकर. तो दैट मीन्स अगर आपका बेस है AE, हाइट है DM, तो आपका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM. दैट मीन्स वी हैव टॉक अबाउट द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन फर्स्ट हमारी आई है ADE का एरिया बेस AD कंसिडर करके, एंड इक्वेशन 3 हमारी आई है ADE ट्राइंगल का एरिया बेस AE को कंसिडर करके. नाउ सी द ट्राइंगल BDE एंड DEC. अगर हम ट्राइंगल BDE को कंसिडर करते हैं तो अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, वेयर बेस इज DB एंड हाइट इज EN. बिकॉज क्लास जो हमने EN हाइट ड्रॉ करी थी वो हमने AB के लिए ड्रॉ करी थी, तो अगर वो AB के लिए ड्रॉ करी तो दैट इज फॉर AD एज वेल एज BD. सो वी कैन सी दैट जो ट्राइंगल BDE का एरिया है दैट इज हाफ इंटू बेस इज BD एंड हाइट इज EN. सिमिलरली अब फिर से राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, दैट इज ट्राइंगल DEC मार्क विद पर्पल कलर. तो फॉर द ट्राइंगल DEC द एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस इज EC and height is DM, and therefore we got the four equation as given on the screen. Now you have to divide equation 1/2 and equation 3/4. So let's do it. Equation 1 is area of ADE is half AD into EN, and equation 2 is area of triangle BDE is half DB into EN. So as you can see, half will get cancelled because it's same in the numerator as well as denominator. Similarly, EN will get cancelled, and therefore you are left with area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon BD. Now similarly on the right hand side, again you have to divide equation 3 and 4, and similarly आपका half और DM cancel out हो जाएगा,
and therefore you are left with area of triangle ADE upon area of triangle DEC will be equal to AE upon EC. So that means have got the equation A and equation B. You can also name it as 5 and 6 also. It's up to you. Now just see this equation A and B. In this equation अगर मैं left hand side को consider करूँ तो ADE तो numerator में है, दोनों में same है. But what about the denominator? एक साइड आपका डिनोमिनेटर में है BDE ट्राइंगल और दूसरी साइड आपका ट्राइंगल DEC. Now observe the figure. ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC दोनों ट्राइंगल आपके DE बेस पर हैं एंड दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में है because DE is parallel to BC. Therefore, you have studied the theorem triangles on the same base and between the same parallel are equal in area. तो क्योंकि BDE और DEC ट्राइंगल DE बेस पर है एंड पैरेलल साइड्स के बीच में है, therefore we can say that triangle BDE का area will be equal to triangle DEC का area. You can mark it as equation C. Now just compare the equation A, B and C. On comparing A, B and C, I can say that कि आपकी दोनों इक्वेशन A और B की लेफ्ट हैंड साइड सेम है बिकॉज देखो ADE तो न्यूमरेटर में दोनों में सेम है, BDE और DEC भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, यानी इक्वेशन A और B की लेफ्ट हैंड साइड सेम है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी. दैट मीन्स यू हैव प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. लास्ट से फिर से बता देती हूँ कि आपने ADE और BDE का रेशियो था AD अपॉन DB एंड राइट हैंड साइड ADE अपॉन DEC का रेशियो था AE अपॉन EC. नाउ क्योंकि आपको राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, दैट मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना है. देयरफॉर आई कैन से दैट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दो तो आपकी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली कंपेयर करके इक्वल हो जाएगी. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कैसे किया? न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम है कि ADE का एरिया की बात करें तो वो एरिया तो सेम ही होगा और BDE और DEC का एरिया हमने इक्वल प्रूफ कर दिया थ्योरम से. एंड सिंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, therefore you can say that AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved.